So good afternoon, team. Since we have reached a stage where our building structure is ready and the work has started, so let's review the progress of our project. So we'll start with you, Sahil. तो जब आप इस बिल्डिंग में एंटर करते हैं फ्रॉम द स्टिल्ट, व्हाट यू गेट इज अ लार्ज स्पेशियस स्टिल्ट एरिया विद एम्पल अमाउंट ऑफ कार पार्किंग. एंड when you enter the apartment, you get a large living cum dining area. Here we have a 4 BHA configuration, giving maximum amount of natural daylight and ventilation inside the building. All the bedrooms have attached washrooms and dressing area. And in the terrace, we have dedicated areas for every single unit where they can have family get-togethers and recreation. Here, we have certain facade elements which break the elevation into different parts, but from inside, we have a continuous balcony running. And above the building, we are creating this unique arched wall, which gives privacy to the people as well as creates a statement for the building. All right, thanks, Sahil. So let's talk about structure. Over to you, Ashwini. सर, हमने जो बिल्डिंग डिजाइन करवाई है वो इस तरीके से करवाई है जो कम से कम 100 साल चले. और सर इसके अंदर जो हम आरएमसी यूज कर रहे हैं वो M25 है जो स्टैंडर्ड में आती है. और हम जो सीमेंट यूज कर रहे हैं वो अल्ट्राटेक है सर. साथ ही हम इसके अंदर जो स्टील यूज कर रहे हैं स्टील टाटा स्टील है. और साथ ही सर हम इसके अंदर अपनी हर एक चीज जैसे ट्यूब टेस्ट हो गया, स्टील टेस्ट हो गया, ब्रिक टेस्ट हो गया, जितने भी टेस्ट बनते हैं उनका रिकॉर्ड भी रखते हैं. और सर हमने इसके अंदर एक रिकॉर्ड बनाया है. हमने हमारे ब्लॉकों के स्टील से लेके 4th फ्लोर की स्लैब तक जो 5 स्लैब भी बनते हैं उसको 100 दिन में पूरा किया. ये भी एक अपने हमने टारगेट. सर मैं आपको एक स्पेशल बात बताना चाहता हूँ. हमने ना स्टील कॉलम से लेके टेरेस की जो स्लैब डाली जो 5 स्लैब बनती है वो 100 दिन में पूरी की है, जो अपने आप में एक अचीवमेंट. बहुत बढ़िया अश्विनी, बहुत अच्छा लगा प्रोग्रेस देखकर. थैंक यू. So अभी हम बात करते हैं इंटीरियर की. So दीक्षा जी, over to you. Let's talk about interior. Since we know this is a luxury project and keeping in view our target audience, we have used all the branded products in our project. For example, if you talk about kitchen, so it's modular kitchen in PU finish, smart storage with Hetic fittings. So wardrobes and TV units in all the bedrooms and living room. Then steam bath and bathtub in the master bedrooms. And also we have vanities in all the bathrooms. Then Italian marble flooring in the entire apartment with 7 indoor units, including the kitchen. Aluminium German brand doors and windows with wire mesh. Fall ceiling in the entire apartment with designer lights and fans. With all this, we have tried to create luxury apartment, which we are sure that our clients are going to love it. Oh, that's great. I'm very happy to see the progress. And as you all have summarized, with that, I just want to remind you also that our target is to complete our sample apartment by February and start delivery of our project from April onwards. So let's work towards those deadlines and make it happen. Good luck.